So weekend, particularly we speak about if it's Saturday or Sunday. We never ever say weekends. Only weekend. Only weekend. Even you have 2 days, Saturday and Sunday, 2 days you have, but still you will say weekend, not weekends. Okay. Yet means abhi tak. Always keep this in mind. Yet we use with has and have only. Keep this in mind. You can never ever say I'm not. I didn't finish my work yet. I didn't finish my work yet. That is wrong. I haven't finished my work yet. I haven't finished my work yet. So yet comes with has, have, had. Now clear? Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Arti? Yes, ma'am. Pratibha? Okay. Yes, ma'am. Yes, If you ma'am. any doubt, you can tell me. I can just speak elaborate this in Hindi as well. If any doubt, you can ask me. No doubt? No, Check ma'am. it. No, ma'am. No, ma'am. Okay, fine. येट का ध्यान रखना. येट हमेशा हैज हैव हैड के साथ आता है. डिड के साथ नहीं लगाना. ठीक है. Okay, okay, ma'am. Now we will talk about frequency. Frequency means how often. It shows how often. Now read it out. Arti, read it out. Adverb of frequency. An adverb of frequency tells us how often an action happens. Examples: always, often, never, rarely, sometimes. Adverbs of frequency: often. For example, I often play basketball on weekend. Sometimes. Sometimes like to watch movies. Rarely. I rarely go to the library. I usually have basketball at 7 a.m. Never. I Wait. Read it carefully. Basketball. Oh, read breakfast. it. Sorry, ma'am. I usually have breakfast at 7 a.m. Yes. Just wait, ma'am. मैं zoom कर लेती हूँ. Just wait. Never. Sorry. I usually have breakfast at 7 a.m. And I never eat junk food. Every day, I exercise every day. Every week, I visit my grandparents every week, once a year. I take a vacations once a year, twice a month. I go to the movies twice a month. Done, ma'am. Okay. Pratibha, Yes. like these questions, like frequency question, how can we frame? Like suppose the sentence is I often play basketball on weekends. So you can ask how often do you play basketball on weekends? Yes. How often do you play basketball? Okay. How Yes, ma'am. often do you like to watch movies? Okay. So how often? Could you please frame sentences with this? How often? Pratibha? Yes, First ma'am. of all, I want to ask you, do you know how to make sentences, miss question sentences, interrogative sentences? Do you know? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Suppose I am telling she is singing. Just frame, convert it into interrogative sentence. I'm singing or she's Yes, ma'am. singing. Question बनाओ उसका. She's singing. Is Hmm? ma'am, I can't. No. What are You are making correct. Yeah. Please proceed. You're yes? doing. What are you saying, ma'am? I'm not getting you. Wait a bit. Pratibha, Yes, ma'am. you are making the sentence. Please create. She is singing. Convert it into interrogative sentence. Is she singing? So why you are not that much confident? Correct. This is the way how you have to frame the sentence, right? Now, Pratibha, suppose I want to just connect it with some WH family. Okay. So if Yes, ma'am. I want to ask you, like, if I say, Yes, ma'am. sorry, if I say, is she singing? The answer will be yes or no. Yes, she is. No, she is not. Right? The answer Yes, should be in yes and no. Right? But if yes, I ma'am. connect this question sentence with some WH family, so I can say when is she singing? When is she singing? वो कब गा रही है? Right? Yes, ma'am. In the con. Okay. So if there is Yes, any like
constant and all. So you can say like contest. So you can say like when is she singing on this contest? Okay. So this is something you are connecting this with WH family, right? Yes, Now ma'am. you have to frame the sentence with how often. Now frame the sentence with how often. How often they play basketball? No, how often do they play basketball? Do they play? Okay, ma'am. Because as you mentioned, suppose if I say I play basketball, I play Yes, ma'am. basketball. Now Yes, ma'am. convert it into interrogative sentence. So I play basketball. There is no helping verb because in that sentence there was helping verb. No, she is Yes, singing. Is was there. But in this sentence, do you have any helping verb? No, no. I play basketball. So is there any helping verb over there in the sentence? कोई helping verb है sentence में? No. तो कैसे बनाए इस सेंटेंस को? So हमारा फोकस क्या होगा? वर्ब की तरफ. I play basketball. So play क्या है? V1 फॉर्म है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, राइट? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, तो उस समय हम लोग डू या डज का यूज करते हैं, राइट? अगर yes, मैं ma'am. बोलती हूँ शी प्लेज बास्केटबॉल, तो मैं कहूंगी डज शी प्ले बास्केटबॉल. बट मैंने बोला है वी प्ले बास्केटबॉल और यू प्ले बास्केटबॉल, ओके? या आई प्ले बास्केटबॉल. तो इसमें डू आएगा. डू आई प्ले बास्केटबॉल? डू यू प्ले बास्केटबॉल? डू वी प्ले बास्केटबॉल? बिकॉज हमारा जो वर्ब है वो एस के साथ नहीं है. इतनी बात समझ में आती है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. दोनों को समझ में आता है ये वाला कॉन्टेक्स्ट? कोई Yes. प्रॉब्लम नहीं है? ओके फाइन. तो अभी क्या है? अभी जैसे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं ना, डज शी प्ले क्रिकेट? डज शी प्ले हॉकी? तो अब इसको मैं हाउ ऑफन के साथ बनाऊंगी. तो कैसे बनाऊंगी? हाउ ऑफन डज शी प्ले हॉकी? वो मतलब हाउ ऑफन, अक्सर कब कब वो, मतलब अक्सर कितनी बार वो हॉकी खेलती है. हाउ ऑफन डज शी प्ले हॉकी? सो यू कैन से शी प्लेज हॉकी once in a week, she plays hockey once in a month, or she plays hockey every Monday. So this is up to you. Now clear? How often? Twice in a week. मतलब कितनी बार वो खेलती है. तो ये आपके ऊपर है, आप कैसे आंसर को फ्रेम करोगे. सो नाउ look, there is mentioned sometimes I like to watch movies. I rarely go to library. So how often do you go to the library? Now मैं क्या चाहती हूँ पता है? क्विकली एक तो क्वेश्चन पूछेगा, बनाएगा. फर्स्ट कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है. ओके. फर्स्ट 5 क्वेश्चन आरती आप बनाएंगे और आप आंसर देंगे. प्रतिभा यहीं से रीड करके. सपोज आरती इज आस्किंग यू, हे प्रतिभा, थोड़ा चेंज कर लेना. या तो हाउ ऑफन डू यू प्ले बास्केटबॉल? सो प्रतिभा कैन से आई आई ऑफन प्ले I बास्केटबॉल often ऑन play वीकेंड. समझ basketball. आ गया? Okay. आपको तो यू लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना? नाउ प्रोसीड. फर्स्ट 5, ओके. जो रेस्ट 4 रह जाएंगे तब आप बनाओगे प्रतिभा क्वेश्चन और आरती आंसर देगी, ठीक है? समझ आ गया? Okay, ma'am. प्रोसीड. How often play basketball? I often play basketball on weekends. Okay. Next मैम sometimes के पूछ रहे हैं, ऑप्शंस के लिए पूछ रहे हैं मैम. ऑफन से, ये सारे ऑफन से बनेंगे आरती, ऑफन से ही बनेंगे. समटाइम्स तो वो आंसर में बताएंगी. Okay. बनाओ. How often how often you watch movies? हाउ ऑफन डू So, यू लाइक? How how often do you like watch movies? sometimes I like to watch movies. Okay. लिसन, हाउ ऑफन डू यू लाइक टू वॉच मूवी? क्योंकि लाइक और वॉच, ध्यान देना मेरी बात पे, लाइक और वॉच दोनों ही वर्ब है, ठीक है? Yes, दो वर्ब एक साथ नहीं आते ऐसे, उसके बीच में जो है इन्फिनेटिव आता है, ये टू इन्फिनेटिव का काम करेगा, ठीक है? और आप कह सकते हैं हाउ ऑफन डू यू लाइक वॉचिंग मूवीज? अगर वॉचिंग लगाऊंगी तो टू हट जाएगा, वो जेरेंट का काम करेगा, वो आगे फर्दर आप स्टडी करोगे तो पता चलेगा. यहाँ पे इन्फिनेटिव का काम कर रहा है. How often do you like watch movies, ma'am? टू लगाना पड़ेगा. लाइक और वॉच दोनों जो है आपके वर्ब है, दो वर्ब एक साथ काम नहीं करते. Okay. How often do लाइक you टू like to watch movies? या लाइक टू वॉच मूवी. ओके, टू को मत हटाओ, How ठीक है? yes. often do you like to watch movies? Sometimes I like to watch movies. Okay. How often rarely go to the library? I rarely go to the library. How often you usually have breakfast?
Usually have breakfast at 7 a.m. Okay. How often you never eat junk food? I never eat junk food. Okay. How often वेट, every day? आपका क्वेश्चन, नो 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 वेट, आपका क्वेश्चन पता है वहां पे क्या होना चाहिए था? आप जो हाईलाइटेड वर्ड है ना, यूजुअली, आंसर तो ये होगा। आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए था, हाउ ऑफन डू यू हैव ब्रेकफास्ट एट 7 AM? अक्सर आप 7 बजे कब कब, मतलब हाउ ऑफन अक्सर कब लेते हो, मतलब 7 बजे अक्सर कब कब लेते हो? तो यूजुअली मैं लेता हूँ, ठीक है? How यूजुअली इज योर आंसर। do you have हाउ breakfast? ऑफन, हाँ, हाउ ऑफन डू यू हैव ब्रेकफास्ट एट 7 AM? Okay. अक्सर 7 बजे आप कब कब अपना ब्रेकफास्ट लेते हो? तो यूजुअली मैं लेता ही हूँ, अक्सर ले लेता हूँ, ठीक है? How often do you have breakfast at 7 a.m.? यस। I usually have a breakfast at 7 a.m. Okay. How often never you eat junk food? I never eat junk food. नो, How हाउ ऑफन डू यू ईट जंक Do फूड? you eat junk food? हाउ Yes. often do you eat junk food? I never eat junk food. Okay. often do you eat junk food? I never eat junk food. How often you exercise? I exercise every day. Okay. आप आरती गलती क्या कर रहे हो पता है? आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा रहे हो। How हाउ often ऑफन डू यू एक्सरसाइज? do you Do you exercise? how often do you exercise? I exercise every day. How often you visit your grandparents? I visit my grandparents every week. वेट अ बिट, आरती रिपीट दिस क्वेश्चन once more. How often do you visit your grandparents? I visit my grandparents every week. I take a vacation every day once a year. How often you take a vacations once a year? रिपीट आरती, क्वेश्चन को रिपीट करिए। How often you take a vacations once a year? आरती हेल्पिंग वर्ब का यूज करिए। How often do you take a vacation डोंट once a year? फॉरगेट टू का यूज करना मत भूलिए आरती। How often? Sorry, ma'am. Please tell me, ma'am. आप डू का यूज करना मत भूलिए आरती, रिपीट करो क्वेश्चन को। Once a year. How नहीं, often? हाँ, डू यू How टेक अ वेकेशन? do you take a Take a vacation? vacation. नेक्स्ट लास्ट वाला। How often do you go to a twice a month? ट्वाइस अ मंथ तो वो आंसर देंगी ना प्रतिभा। How हाउ often? ऑफन डू यू गो टू मूवीज? How often आरती, do you go to the movies? यस यस How प्रतिभा, often you रिप्लाई go हो। to? Uh, I go to the movie twice a month. नाउ प्रतिभा, आप फ्रेम करेंगे Yes, क्वेश्चन, आरती आंसर देंगी, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब yes, जरूर लगाना, आरती मिसिंग yes, कर रही। ma'am. How often do you play basketball? I often play basketball on weekends. How often do you like to watch movies? I often sometimes I like to watch movies. I sometimes like to watch movies. How often do you go to the library? I really go to the library. How often do you have breakfast at 7 a.m.? I usually have breakfast at 7 a.m. Uh, how often do you eat junk food? I never eat junk food. How often do you exercise? I exercise every day. How often do you visit your grandparents? I visit my grandparents every week. How often do you take a vacation? I take a vacation once a year. How often do you go the, to watch a movie? I go to the movies twice a month. ओके, टेक अ Yes. स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, फ्रीक्वेंसी का स्क्रीनशॉट लीजिए आरती।
डन? Yes, ma'am. आपने भी ले लिया प्रतिभा? Yes, yes, ma'am. और ओके, टुडे प्रकाश इज नॉट देयर ना? No, ma'am, he's not here. इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू। डन? Yes, ma'am. Wait, wait. Done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. But I wanna make a sentence by using all these adverbs of time quickly. Quickly. Come up. Aarti, proceed. Adverb of time. An adverb of time tells us when an action happened. No, Example, no, Aarti, that is already done. You have read that. But I want the highlighted words are there now, today, tonight, yesterday, tomorrow, soon, later, previously, quickly, finally, yet. okay, ma'am. सेंटेंस बनाइए अपने अपने यहाँ से नहीं करना अपने सेंटेंस बनाओ कम अप विद योर ओन सेंटेंसेस Now, I'm playing now, today. जो अच्छे से कुछ और बनाओ ना वेयर आर यू गोइंग नाउ कुछ Okay, और बनाओ क्वेश्चंस की भी बनाओ राइट नॉट सिंपल सेंटेंसेस यू आर नॉट सपोज टू फ्रेज सिंपल सेंटेंसेस बट आई वांट ना कुछ डिफरेंट कुछ हटके कोशिश करो today we are going to market. We are going to market today. सी सी ये टाइम है ना तो अभी हमने बोला था Yes, ना कि टाइम को मैंने बताया था कि टाइम को हम आगे पीछे जब मर्जी कर सकते हैं देखो एक तो सेंटेंस के एंड में और आपने शुरू में लगा दिया कर सकते हैं नो प्रॉब्लम ठीक है okay. now I am eating or I am eating now both are correct right I'm eating now. now what are you doing what are you doing now both are correct because this is not a frequency that is what was that frequency adverb of frequency होगा तो 100% वो बीच में आएगा right इनको Yes, आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं no problem there is no hard and fast rule okay now make a sentence quickly एकदम एंड तक बनाते हुए जाना ठीक है proceed अच्छा ये सभी के बनाने हैं मैम नाउ टुडे टुनाइट यस्टरडे टुमारो सुन सभी के बनाने हैं ऐसा करते हैं सुनो हम्म प्रतिभा Yes, ma'am. अब आपकी प्रतिभा दिखाने का समय आ गया क्वेश्चन बनाओ आरती आंसर देंगी क्वेश्चन इन्हीं से बनेगा फाइन कुछ आरती का आंसर इसी से आएगा ओके मैम डिड यू गेट माय पॉइंट when are you going to watch a movie just tonight only I have booked a ticket for 2 people so I'm going with my husband and all right so what is there you have to frame some sentences and Aarti the answer of Aarti would be definitely one of these words now did you get my point Yes, ma'am. Pratibha Yes, ma'am. Uh, proceed Whenever you're playing, I'm playing when do you now whenever you playing matlab just a step whenever you playing means okay if, Pratibha you can ask him when are you going to cook your breakfast so she can say I'm going to cook my breakfast now okay clear कुछ yes, ऐसा बनाओ ओके आंसर नाउ का वो देगी आ, आरती देंगी टुडे टुनाइट ये आंसर आरती के मुंह से निकलेंगे आपके मुंह से नहीं आने चाहिए ठीक है आपके yes, सिंपल क्वेश्चन है समझ आ रहे प्रोसीड when are you reading a book? Read a book. I'm नो reading व्हेन आर यू रीड अ बुक और व्हेन डू यू रीड अ बुक आप आर लगा रहे हो तो आप बोल सकते हो व्हेन आर यू गोइंग टू रीड दैट स्टोरी बुक व्हेन आर यू गोइंग टू रीड दैट स्टोरी बुक दैट इज क्वाइट एक्साइटिंग ठीक है इंटरेस्टिंग दैट इज क्वाइट एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी ओके आप ऐसे बना सकते हो समझ आ रहा है मेरी बात प्रतिभा Yes, ma'am.
आपको तो आर के साथ लगाना है ना। आर नहीं, आर अगर है आपके क्वेश्चन में तो 100% वर्ब में आईएनजी आना चाहिए। अगर आर नहीं है तो डू का यूज होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई होप यू आर अवेयर ऑफ टेंसेस। प्रतिभा, Yes, ma'am. ना, When are you समझ, going to ठीक। watch movie, Pratibha? Yeah, Aarti, she has asked you a question. Reply to her. I'm asking, ma'am. I'm asking to Pratibha. When do you go to read a book? When do you go to read a book? I'm reading book now. When do you see a picture? I I will see picture today. Not see, watch. Do you मूवी की बात कर रहे हो क्या आप? watch? Picture, Yes. picture, tasveer picture. Hmm? Okay. Okay. So Do you yeah. have So do you have any plans for night? Yeah, I have a plan for tonight. Do you have visit your grandparents? Yeah, I visited my grandparents. no, क्वेश्चन तो इसका ये नहीं होगा। फिर से बनाइए इसको। प्रतिभा, क्वेश्चन को फिर से रिपीट करिए जरा। When do you visit? When do you visit your grandparents? I visited my grandparents yesterday. When do you have a meeting? I have a meeting. I have a meeting tomorrow. When do you go प्रतिभा for आपका there? कुछ When do you go for there? नो डू नहीं आएगा प्रतिभा। ऑलरेडी देयर इज समथिंग विल। व्हेन विल यू बी देयर? When will you be there? When will we? When we- I will be there. I will be there soon. I will be there later. So Pratibha, let's catch up later. How can you just connect this sentence with can you relate it with any story? Anything like as a conversation, Pratibha? Yes, yes, ma'am. कुछ कॉन्वर्सेशन में इसको यूज कर सकते हो आरती के साथ? Sorry, ma'am. I get You that. don't know, na? So you can say like, Aarti, it's high time now. So I have to call it a day. Let's catch up later. Okay? Yes, ma'am. मतलब बहुत मतलब अभी जो है कुछ हाई टाइम है मेरे सोने का या कुछ है। Yes, So ma'am. now I have to call it a day. अब मुझे wrap up करना पड़ेगा। Let's catch up later. चलो बाद में मिलते हैं, right? So Yes, you ma'am. can use this sentence over there, right? Okay. Now come up. Uh, Yes, Aarti. Sorry, Pratibha. yes, ma'am. Try करो next वाला. Uh, uh, Aarti, now I had to
Let's catch up. Aarti, now I had to sleep. Let's catch up later. Ma'am, is it? ओके आरती, ये जो लास्ट के फोर है ना, जरा बनाना इसको। क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं, बट थोड़ा सिचुएशन के साथ इसको लगाओगे आरती? Soon, later, Previously worked at that company. previous, previously worked at that company. Currently, I'm currently reading a book. What are you doing currently, Pratibha? I'm आरती, current. ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ना, फोर्थ वाला, Yes, ma'am. क्या बोला आपने? प्लीज कम अगेन आरती। Currently, ma'am. What are you doing currently? I am नो। currently. Reading a book. अच्छा, आपने प्रीवियसली का क्वेश्चन नहीं बनाया आरती? प्रीवियसली को किसी के साथ, सिचुएशन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं आप? फॉर एग्जाम्पल, आरती, that school is really reputed one. Okay, have you heard about that school earlier? So you can say, yeah, I I previously worked worked at that at school. school. Yeah. Yes. Okay, connect करो किसी सिचुएशन के साथ। Did you get my point, Aarti? No, ma'am, I'm not getting you. Please. Listen, previously हमारे सेंटेंस में आना चाहिए ना, तो Yes, आप ma'am. इस सेंटेंस को कहाँ पे यूज कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू एंड आर, वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, ओके? So during our conversation, suppose I have mentioned you some reputed company or some like about some reputed school and all. So I may ask you, Aarti, hmm, have you ever heard about that school that is quite reputed, in our locality? So you can say, yeah, I know. I previously worked at that school. अभी समझ आया? Yes, ma'am. आरती समझ आया? Yes, ma'am. And what about you, Pratibha? समझ आया? Yes, ma'am. तो प्रीवियसली का आप ऐसे यूज कर सकते हैं ना सेंटेंस में। नाउ कम अप। Previously, okay. Have you heard that firm, Pratibha? Have you ever heard about that company? Have you ever heard about that company? Yes, Have you heard? yes, I previously worked at that company. Okay. What are you doing currently? I am currently reading a book. Um, Wow. Oh, sorry. Finally, it's the weekend. Aarti, is it your off tomorrow? Yes, finally, it's the weekend. Okay, off for tomorrow. Have you finished your work? Have you finished your work, Pratibha? I haven't finished my work yet. No. If Aarti has asked you, na, have you finished your work? So definitely you should say no. I haven't finished my work yet. But this is Yes. simple statement. You are not answering the question. I haven't finished my work, so you can say, Aarti, could you please wait for me a while? Okay, for 5 minutes Yes. because I haven't finished my work yet. Yeah, Yes. Yes, ma'am. got it? Fine. Yes. So fine. You have taken the screenshot now, which I want. Just take practice of this adverbs. Okay, fine. Okay, ma'am. Now moving towards some conversation practice, right? Would you like to go with the same, Aarti? Yes, ma'am. Okay. Do you have any any topic in your head, in your mind? You can share, Aarti or Pratibha. Any topic, so that you can speak a lot. Uh, don't take randomly any topic that you don't have that much idea and all. What I want, the topic should be very like general and from our day-to-day life, so that you can easily elaborate that particular topic. Okay.
Okay, fine. Pratibha, Yes, ma'am. okay, I'm giving you a hint, right? Mhm. Pratibha, I'm feeling really very tired. Could you please, uh, like, make me a cup of tea? So now, how would you make a tea? The procedure you have to share with us in the kitchen when you enter the kitchen, from beginning till end, all the steps you have to share with us. Proceed. Yes, ma'am. Firstly, I go to kitchen and then I switch on the gas and I putting a pan on it. Then I add water. I pour water. I pour some water in it and then I add 2 spoon of sugar and tea also, and then I add milk and I boil it for some times so the tea is ready. The same thing. Aarti, When I tell me entered, the procedure. mm, Procedure. okay. First of all, when I entered in the kitchen, first of all, I switch on the gas, and I take one pan and put in uh, put in the gas stove and add some water, a cup of water, and uh, and 1 spoon of sugar, and 1 scoop of tea added. And for sometimes when it boiled, then I also take um, half cup of milk and add it. And and when it, and for sometimes after sometimes the tea is ready. Okay, good try. Uh, whenever you are just sharing any procedure and all, you can say like this. First of all, I enter the kitchen and I would turn on the stove, gas stove. After that or thereafter, I will put the pan along with a cup of water. For some time, I will let it boil after adding some tea leaves. When it turned into brown, definitely I would add 1 teaspoonful of sugar according to taste and some milk as well. Later on, I will just let it boil for some time. Finally, my tea is ready. I will serve it for myself, right? Okay. Second, suppose you want to buy an apartment. You want to buy an apartment from beginning till end. What will be the procedure for the same? Pratibha, go ahead. Yes, ma'am. First Dear, of you all, want to buy an apartment for yourself, for your family. So what are the steps you will go through? Just start. Share with us. First of all, I search and then I get a good apartment. Then I will take them and Okay. What about you, Arti? first of all, I will search a best property dealer, and I went to, and I got a best property dealer.
I got a best property dealer. I went to the property dealer, and I will talk to with him and about apartments, and I will. That's Done, all. Aarti? Yes, ma'am. Okay. So for me, if I'm thinking to buy an apartment for myself, what I will do? First of all, I will search online whether there is any option according to my budget. So first of all, I will take care of my budget, how much amount I have to buy a house. According to that, I will seek for a good apartment for myself. Then after, if it is not possible through online, so I will definitely try to connect with some offline property dealers. I will try to access them and tell them everything about my budget and all. If he suggested me any apartment and all, so definitely I will go and check over there whether all the important amenities which is really need of my surviving and all, like I would say the access of hospital and market, school, everything. If all those amenities are accessible for me, so definitely I will just buy for the same. But for that, I should have the amount. If I am lacking back, like if I have lack of some amount, so definitely I will go through some procedure of loan and all. For that, I have to meet like I will have to take some help from bank and all. I have to take the loan from bank, and after all the paperwork and procedure, definitely when the building will be ready, so I will get the possession, and the key will be in my hand. I will just move towards to my own house, or I will shift to my house. Okay. So this is something like you will have to go some procedure. आप ऐसे ही नहीं ले लेंगे घर, आप वहाँ की सब चीजें देखेंगे, all the amenities are available or not. If there is those amenities are not accessible for you, so definitely you are not going to have that. Okay, it should be like in 5 kilometer and all the amenities should be there, even though whether it is like how far it is from your working place and all distance and all, you will have to check each and every domain. Okay, if all the domains are satisfied for you, then only you can just buy an apartment, otherwise not. Now got it? Yes, ma'am. Okay, fine. Now, mm, I'm just going to give you one scenario. You both are very good friends, okay? Aarti and Pratibha. Mm, you are childhood friends, right? But after schooling and all, you both get like separated. Uh, Now, after a long time, you both just came across uh, to each other in a market. You have to start a conversation. How can you start your conversation? Proceed. It should sound like that you are meeting after a long time. Okay. Call, like maybe it is Aarti. Aarti will call it Pratibha, or Pratibha will call Aarti, whatever it is. Okay. And then after you can just call him, after meeting to her, you can ask her about her family and all, what is going on in her life. Or maybe you can just tell her there is a cafeteria. Why don't we just go and sit over there and have a like, okay, have a small chit chat and all. Please proceed. Go ahead. Hello, Pratibha. Hi. Hello, Aarti. How are you? I'm fine. Thank you, Pratibha. And what Hey, about you? Aarti is so excited, but Pratibha, she's so cool. Why, Pratibha? You are not happy to see your like childhood friend? Yes, There ma'am. should be in your voice that kind of excitement should be there, right? Proceed. Hello, Aarti. How are you? Hi, Pratibha. How are you? I'm fine. Thank you. And what about you?
I'm fine. How What is many going long on? time, how many long time you? How's your mother, father? How's your parents and younger brother? Yes, yes, they all right. All. Hmm. So now, what are you doing in these days? I have been pursuing BSc final year. And what about you? I'm just taking tuition classes of students Okay, and and also join the school and busy in busy in school, busy in job. And what about you, Pratibha? Okay, Aarti. Yes, ma'am. Hey, Aarti, how are you? I'm And fine. where have you been? Aarti, where have you been? It's been ages, really. We didn't meet to each other. So, what is going on in your life nowadays, Aarti? Have Hello. a conversation with me. Okay? Okay, ready? Okay, ma'am. Fine. Okay. Hey, Aarti. Wow, it's lovely to see you after a long time. So, how is it going on in your life? And where have you been? It's been Hello. ages. Yeah, Aarti. Hmm. Hello, ma'am. Mhm. Why you are sounding so low? Now you should sound. Oh my God. Oh my God. Again. Okay. Please. With full of like excitement and all. Okay. Hey, Aarti, how are you? Hello, ma'am. Fine, thank you. And what about you? Yeah, I'm good, dear. And like it's been ages I haven't seen you. So, what are you doing nowadays? Just quickly tell me. मैं एक्साइटेड होके कैसे बोलूं? Oh my God. बोलो बोलो जो भी बोलना है बोलो quickly. Yeah, speak. Yes, ma'am, I'm Actually, speaking. your voice modulation, your like feelings, everything should be just highlighted when you are speaking. Okay, I'm that is feeling very important, Aarti. Yeah. I'm feeling so happy to see you, ma'am. Really, it's so Likewise, Aarti. Yeah. and really, I'm so happy. You just tell me about your family, about your parents. Yeah, all they all are good, Aarti. And like, have you got married? Okay. Yeah, I'm Hey? married. Yes, Oh, I'm married. really? Yeah, Mm-hmm. married. So, do you have any kids? Do you Yeah, have any yeah. kids? Kid, Okay. kid boy, and his name is Arav. Oh, really? So, is means how old is he? He is 8 years old. Lovely. And what about your husband? Is he? My husband, What does he do? yeah, my husband is a Mm-hmm. doctor, and his name is Doctor Deepak. Oh, really? It's lovely to know about him. So, I think you are just enjoying your life, right? Yeah, yeah. So why don't you just come sometime at my place? Or if you're free right now, so why don't you join me in cafeteria? Are you free? So let's go there. Let's go there. We can have a small chit chat, okay? If you're free. Are you free right now, Aarti? Yes, ma'am. Are you free? So come on, join me. So this is how you can just kick off your conversation, right? Now what I want with Pratibha, please proceed. Hello, Yeah, Pratibha. Aarti, Pratibha, quickly. Yes. Your just voice and everything should be full of excitement. अपने दोस्त से मिल रहे हो इतने दिनों बाद इतने डल क्यों लग रहे हो या proceed. Hello, Pratibha. Hi, how are you, Pratibha? Hello, Aarti. I am good. And what about you? How are you? I'm also fine, Pratibha. So after Uh, so long time, Pratibha.
Yeah, How yeah. how's your parents? Uh, my parents. Oh, good. They are fine. And what about you? What are you doing now? Uh, uh, these days, I also joined the school and I'm doing my job. Hello, Pratibha. Yes, yes. Nice to meet you. So much, Pratibha. What are you doing for living? But I What are you doing for living? I have been pursuing BSc final year, What are you and doing nowadays, Pratibha? What are you doing nowadays? Listen, if someone asks you, what are you doing for living? So you can say, yeah, for living, actually, I have been working in nearby school or I have been provided some coaching classes, okay? For living मतलब खर्चा वर्चा चलाने के लिए जो क्या करते हो आप, ठीक है? What are you doing for living? And what are you doing nowadays? इसके लिए भी आप normally बोल सकते हो क्या करते हो? So basically, I'm just pursuing my study and all. Uh, that's it. जो भी कर रहे हो आप वो बोल सकते study. हो. Or I have been working in this particular farm and all. As a जो भी आपका डेजिग्नेशन है वो आप बता सकते हैं, राइट? Yes, ma'am. द क्वेश्चन शुड बी लाइक दिस. आपने पूछा व्हाट आर यू डूइंग. व्हाट आर यू डूइंग का मतलब है वो अभी क्या कर रही है आपके सामने. वो तो आपके साथ बात कर रही है, राइट? Yes, गॉट इट? yes, डिड यू गेट माय पॉइंट और नॉट? एम आई ऑडिबल और yes, नॉट? yes, ma'am. Yes, समझ ma'am. आया? Yes, ma'am. डिफरेंस समझ में आया? अगर आप बोलते हो व्हाट आर यू डूइंग इसका मतलब वो क्या कर रही है, वो तो आज तक बात कर रही है. व्हाट आर यू डूइंग नाउ अडेज, व्हाट आर यू डूइंग फॉर लिविंग, फिर तो फिर भी समझ में आता है क्या What लाइफ are में क्या कर रहे हैं. Okay, ma'am. Okay. Hello, Pratibha. What are you doing for living? What are you saying? I'm not audible. Sorry. I am not audible, not you are not audible. I'm audible, Pratibha. Yes, yes. Now you uh, are audible. Okay, what are you doing? What are you doing for living? I pursue my study and all. आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं. आप क्वेश्चन पूछते वक्त आप बोलते हैं आई एम ऑडिबल प्रतिभा. वो क्वेश्चन नहीं है. एम आई ऑडिबल प्रतिभा? क्या? Yes. वो तो स्टेटमेंट हो गया. आई एम ऑडिबल प्रतिभा. आरती समझ आया? आरती, डिड यू गेट इट? Ma'am? ओके. ओके ना अपनी तरफ से कुछ भी आरती अगर मैं एक टॉपिक दूं उस पे बोलोगे आप? आरती, आर यू रेडी टू स्पीक ऑन सम टॉपिक? Yes, ma'am. I will try. ओके. टाइम मैनेजमेंट. कैन यू स्पीक ऑन टाइम मैनेजमेंट? Time management. Time management. Time management is the most important topic, sir, ma'am. Time management. Time never stop. Time can't wait for anyone. Time management. Time management. Time management. प्रतिभा, what do you understand by time management? Please proceed. Yes, ma'am. We should use our time properly. We should do our work in time because time never stop or it never wait anyone for anyone. So we have to do our work, our things at time.
and be on time also. Are you done, Pratibha? Yes, yes, ma'am. Are you done, Pratibha? Or would you Yes, like to just add some more points? Pratibha, yes, are ma'am. you I'm done? done. I'm yes, ma'am. Right. Okay. Listen, very carefully listen to me. Then after, again, you both have to speak, okay? Whatever you are going to understand. Listen, time management. It is one of the soft skills, right? Time management is something which teaches us how to manage our time. Time is something that is equal to everyone, that is equally just have everyone. But how particular person utilize his time, it makes him distinct from others. Time and tide waits for none. The time once lost can never be regained again. So we should try to respect time. Time is equivalent to money. Time management is a quite important technique, how to manage our time. In our day to day life, though we have a lot of things to do, but we should try to prioritize our task. Means which task is really essential for us. We should try to do that task first. How we have to schedule our time, it completely depends on us. There is one technique that is called Pareto technique. That technique teaches us that how to prioritize our task. Prioritize our task means like if you have 10 tasks, you have to select 8 out of this. Means actually think that suppose you are doing 2 tasks, that 20% effort will bring 80% result. अगर आप 20% कोई काम करोगे उसका 80% रिजल्ट आएगा so that is called Pareto technique. We should try to prioritize our task first. It means the task which is really difficult for us, the task we should do first in the early morning. But what happens? People just try to procrastinate those tasks, which is really difficult for them. And they just try to accomplish that task which is easier for them. So this is why they just procrastinate that task. As we all are very energetic in the beginning of the day. So we should always try to do that task first, which is really difficult for us. There is a very beautiful book, like self-help book is there, that is that dirty means ugly frog first. Ugly frog in the sense the difficult task, because difficult task always require a call for a lot of energy. If we are energetic, so definitely we can easily accomplish and understand that task, how we have to accomplish that means finish that. Otherwise it become very challenging for us at the end of the day, because at that time we feel ourselves drained out completely, exhausted. And our mind, it just doesn't support us. So this is why we have to prioritize our task and have to manage our timing according to it, because not time is not for only our work, as well as we should try to find out some time our family members for our own growth as well. So at last but not the least, we should be efficient in time, like what was the topic? Yeah, we should be efficient in time management. Okay, if we are aware of the techniques of time management, so we can achieve anything in our life, right? Now you can proceed, Arti. Did you understand what I wanted to just mention here, Arti? Little bit.
लिटिल विथ, थोड़ा सा समझ में आया। चलो मैं हिंदी में बताऊं। Yes, ma'am. अच्छा, आप प्रतिभा को समझ में आया? प्रतिभा, Yes, ma'am. Same here, little bit. अच्छा ठीक। देखिए टाइम, देखो हमारे ना 2 स्किल्स होती है। ओके, सॉफ्ट स्किल एंड हार्ड स्किल। हार्ड स्किल तो वो होती है जो कि हम लोग जैसे कंप्यूटर वगैरह का स्किल है। सॉफ्ट स्किल जो होती है ना वो काफी सी डिफरेंट होती है, उसे कैसे बात करना है, कैसे क्या करना है, बहुत सी चीजें होती है। सॉफ्ट स्किल इट इज एन अम्ब्रेला टर्म। तो उसमें से मैंने एक टाइम मैनेजमेंट लिया है। तो टाइम मैनेजमेंट क्या होता है ना, ये एक तरह की टेक्निक होता है कि हमें टाइम को अपने कैसे यूटिलाइज। टाइम ही एक ऐसी चीज है जो लोगों के पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, कुछ चीज डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, बट टाइम है। बट कोई इंसान जो है, जो बहुत ही प्रोमिनेंट इंसान है, जो काफी फेमस है, वेल नोन है, वो अपने टाइम को कैसे, ये जो उसका मैनेजमेंट का टेक्निक है ना, इस वजह से उस मतलब वो जो है दूसरों से अलग होता है, डिस्टिंक्ट होता है और लाइफ में बहुत तरक्की भी करता है। राइट। तो ये टेक्निक जो है अगर हमें आती है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट टेक्निक क्या होता है, हमें पहले ये समझना चाहिए कि हमें किस काम को पहले करना चाहिए, किसको बाद में। एक जो मैंने बोला पैराटेक होती है, उसमें जो होता है ना वो सिखाते हैं उस काम को पहले कि आप 20% एफर्ट लगाते हो लेकिन 80% रिजल्ट आता है। देखो किसी कंपनी में भी अगर देखो, अगर 10 लोग हैं वो काम कर रहे हैं, तो उसमें से 2 जो होते हैं इतने अच्छे होते हैं कि उनकी मेहनत की वजह से ही कंपनी को मुनाफा होता है। ठीक है। वो कुछ अलग के होते हैं उनका काम, तो वो 20% एफर्ट जो लगाते हैं ना, वो कंपनी को 80% का रिजल्ट आता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि टाइम वेस्ट करते हैं, उनको नहीं आता, तो 80% एफर्ट लगा के 20% रिजल्ट आना, तो दैट इज नॉट देयर इज नो पॉइंट ऑफ दैट। राइट। सो हमें अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, कौन सा काम सबसे पहले करना है, या हमें प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए काम को। और हमेशा उस काम को पहले करना चाहिए जो कि रियली डिफिकल्ट है हमारे लिए। लोग क्या करते हैं, वो आसान काम को पहले कर लेते हैं, उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है ना, वो थक जाते हैं। सारा का सारा जो एनर्जी होता है वो क्या करते हैं, आ, उसमें डाल देते हैं अपने, क्या कहते हैं, जो काम आता है उसमें। बट हमें जो है ना, ये क्या करना चाहिए, सबसे पहले उस काम को करना चाहिए जो कि हमारे लिए रियली बहुत चैलेंजिंग है एट द वेरी फर्स्ट ऑफ द डे बिगनिंग। क्यों? क्योंकि उस टाइम हम लोग फ्रेश होते हैं, हम बहुत एनर्जेटिक होते हैं, तो चीजें हमें बहुत जल्दी क्विकली जो है ना हम उसको ग्रैब कर सकते हैं, हमें समझ आ जाता है। ठीक है। और वो काम बहुत ही मतलब एंथुजियास्टिकली यू कैन जस्ट कंप्लीट दैट टास्क, ओके, इफ यू आर डूइंग इन अ टीम एंड ऑल, कुछ भी। लेकिन अगर आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है किसी चीज को पुट ऑफ करना, मतलब क्या कहते हैं उसको, आ, मतलब प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब है आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, कल नहीं करेंगे, चलो परसों कर लेते हैं। वो करते हैं ना, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, पर्टिकुलर वर्ड मुझे ध्यान नहीं आ रहा। किसी काम को टालना, टालना, ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब टालना। तो हमें, हम जो होते हैं ना, जब हम पूरा डे अपना पूरा एफर्ट लगा लेते हैं किसी ऐसे काम पे जो हमें आता है, तो वो जो डिफिकल्ट काम है ना उसके लिए हमारे पास एनर्जी बचती ही नहीं है। फुल्ली हम एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। तो उस टाइम हम सोचते हैं चलो ये काम कल कर लेंगे, और अगर हमारा प्रोसीजर ऐसा ही बना रहता है कि हम जो इजी काम है उसको पहले करते हैं, तो डेफिनेटली इस काम का तो कभी टाइम ही नहीं आएगा। तो हमें उस काम को पहले करना चाहिए जो कि रियली बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है हमारे लिए। ठीक है। तो हमें हमेशा ऐसे काम का चुनना चाहिए जिससे कि हमें 20% बहुत ही कम एफर्ट लगाना पड़े, लेकिन उसका रिजल्ट सबसे ज्यादा आए, 80% आए। ठीक है। बट ऐसा नहीं करना चाहिए कि 80% पूरा एफर्ट लगा दिया और 20% रिजल्ट आया। क्योंकि देखो जो काम इजी है, जो कि कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट ही नहीं है हमारे लिए, छोटे मोटे काम है, उसको करके क्या फायदा। हमारा मेन काम तो हमारा वो काम है जो कि बहुत ही बड़ा है, जो कि चैलेंजिंग है, जो कि हमें सपोज स्कूल है। अब स्कूल में कितने सारे छोटे छोटे काम होते हैं, नोटबुक चेक करना, कोई कोई छोटे छोटे काम होते हैं, और उसी के बीच में अगर मान लो कि कोई ऐसा बड़ा काम आ गया कि कोई बड़ा सा इवेंट है स्कूल में, जैसे ईयरली का हम करते हैं ना फंक्शन वगैरह, कोई इवेंट है। अब हम क्या करते हैं, उस इवेंट को ध्यान देकर चलो बच्चों को हम बाद में प्रिपेयर करा देंगे, छोड़ो अभी भी, पहले हम नोटबुक चेक कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो वो डे है ना, डेडलाइन होती है, वो सामने आने लग जाती है, तो हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, कोई भी काम को पहले कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको फोकस करना चाहिए, उसको चुनना चाहिए, कौन सा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि काम है उसको तो कर लिए, अब जो सबसे मेन वाला काम है वो पड़ा रहा, तो रिजल्ट तो हमारा जीरो के बराबर हो गया ना, वो रिजल्ट आने ही नहीं वाला, क्योंकि हमें तो अपने सीनियर्स को आंसर देना पड़ेगा, बहुत सी चीजें होती है। तो हमें हमेशा मुश्किल काम को पहले करना चाहिए, आसान में अपना पूरा जो एनर्जी है उसको वेस्ट नहीं करनी चाहिए। समझ आया?
और टाइम मैनेजमेंट जो है एक ऐसी टेक्निक है जो हमें सिखाती है कि अपने टाइम को हम कैसे यूटिलाइज करें, क्योंकि जो टाइम होता है ना वो बहुत जल्दी उड़ जाता है। ठीक है, तो हमें अपने टाइम को बहुत ही ध्यान से और बड़ी ही वाइजली जो है यूज करना चाहिए, जिससे कि हमें जो कुछ अपनी लाइफ में चाहिए, जो भी हमारा विजन है, जो भी हमारा गोल है, हम उससे अचीव कर सके। नाउ इज इट क्लियर? अभी समझ आया? प्रतिभा, आरती, Yes, ma'am. समझ Yes, आया? ma'am. देखती हूँ कल मैं टाइम मैनेजमेंट का एक आपके साथ कुछ शेयर करती हूँ, ठीक है? उसको रीड करना। फाइन, उसको रीड करोगे तो और ज्यादा अच्छे से आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड है, वोकैबलरी है, जैसे प्रायोरिटाइज हो गया, प्रोक्रेस्टिनेशन हो गया, आपको न्यू न्यू वर्ड मिलेंगे। ठीक है, Okay, कल मैं ma'am. इसको आपके साथ। ओके, Yes, नाउ ma'am. टेल मी लाइक हाउ वाज द सेशन, योर फीडबैक एंड एवरीथिंग, प्लीज प्रोसीड। आरती, यू कम अप फर्स्ट। Today's session was so, ma'am. यस, व्हाई? I don't know, ma'am. I don't know, but today's session was so. So why? Just I'm asking to you, why? You have learned adverb, the uses, you have framed the questions, you got the chance to speak. I But have yeah, learned actually, adverbs, ma'am. actually, uh-huh. But yeah, Yesterday's session was quite like I would say hilarious type session, I believe. So that's why you were feeling energetic and all, right? But yes, today, like we are just studying and learning new things. yes, Maybe you are not that much. But you know, Aarti, all these things, like whatever we are bringing on the table, these are really very important for you. And yes, on the very beginning day, I said to you that if you are being specific for something, so it is no use. There is no use, because you have to just learn like from everywhere. Means you have to what I can say, broaden your knowledge and all from every sector. Whether it is like as I mentioned you, what are the procedure of making cooking or something like that? What are the procedure of buying a house? But accord how you are elaborating your things and all, it is very important. You know, there are some no. connectors. But I think, ma'am, Yes, Aarti. according to me, when I will teach some grammar, some grammars, then I think I will able to highly conversation. According to me, You no, not according to me. Never ever say according to me. In my perception, okay? In my okay, point of view. According to me नहीं बोलना, ठीक है? okay, अच्छा, listen. हाँ, it is good. Like now, Aarti, I'm telling you. Do you want to go with only grammar session? yes, ma'am. अगर आप ग्रामर सिर्फ ग्रामर ही करेंगे तो आप फिर बोलना कब सीखेंगे? तो Oh, ma'am. ग्रामर तो करते करते आपके, सुनो मेरी बात आरती, पहले लिसन टू मी वेरी केयरफुली। Okay, I'm ग्रामर listening. इज अ बैकबोन, ग्रामर इज अ बैकबोन। आई Yes, डोंट ma'am. डिनाई दिस फैक्ट। क्या उसके साथ आप ये नहीं चाहते कि आपको स्पीकिंग आए, आप हर चीजों को जानो? Course, of नहीं course, चाहते, ये बताओ। ma'am. I want this, ma'am. हम्म, Of course. है ना? अब आप स्कूल में That's आप why टीच I करते हैं, joined राइट this आरती? class. That's आप why I joined आप this class. स्कूल, आप देखिए, आप स्कूल में टीच करते हैं, राइट? अभी Hmm. क्या होता है आरती, आपको ग्रामर तो आप क्लास में पढ़ाओगे, Yes, वो ma'am. आपको सिखाया जा रहा है। अलॉन्ग विद दैट आपको बातचीत भी तो लोगों से करनी है, वो कैसे हैंडल करोगे? क्या ग्रामर एक छोटे से एडवर्ब या नाउन एक दिन पढ़ के पूरे वीकली हम यही पढ़ते रहेंगे तो स्पीकिंग आपको कब आएगी? वो भी तो हमारा क्राइटेरिया है आरती। Yes, ओवरऑल जो है आपका परफॉर्मेंस हम सब देखेंगे, सिर्फ एक एक के ऊपर नहीं चल सकते आप। समझ रहे हैं? yes. समझ रहे हैं? बिकॉज Of- यू नो इन द आफ्टरनून सेशन देयर इज वन ऑफ द लाइक लेडी, शी इज फ्रॉम चाइना, आई टीच हर। Within 1 month she learned a lot of things, and I'm just providing her from everywhere. She is like in front of you, she is nothing. Actually she has never ever went like she has never ever gone to school, you know, I know but she is very well. progress. I'm I know about her. Yeah, so now Aarti, the thing is that you have to be open minded, right? If you are Yes, not open minded, so it will be very difficult for you to grasp everything. You should be like, I would say, embrace everything whatever is coming up on your way, and just listen and try to be enthusiastic.
अगर आप खुश हो, एंथुसियास्टिक होगे, लेकिन अगर आप डल हो किसी चीज को देख के, ये क्या है, तो सीख पाओगे, इंटरेस्ट नहीं आएगा। बट लेटर ऑन आपको जरूर पछतावा होगा, जब वही चीज आपके सामने कोई और डिस्कस कर रहा होगा ना, I तब just आपको ध्यान आएगा, ओहो ये चीजें तो हमें सिखाई जा रही थी बट मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया। इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है, इंटरेस्ट आपका सब चीजों में आना चाहिए। पर्टिकुलरली आपको ये चीज मेन होना चाहिए कि इंग्लिश, आई लव इंग्लिश। अभी इंग्लिश में जो भी कुछ आएगा मैं सब कुछ करूँ, कुछ भी, वो कुछ भी हो सकता है, वो वोकैब से रिलेटेड हो सकता है, वो टॉपिक से रिलेटेड कुछ हो सकता है। बट मैम समझ राइट रहे हैं आप? आई थिंक कि मेरा जो टेस्ट होगा मैम उसमें ग्रामर्स की जो है वो 30 मार्क्स का ग्रामर ही है मैम। और मुझे अच्छा, वो आपके एग्जाम के लिए अपियर होना है? यस मैम। ओके, कब है आपका एग्जाम? मेरा एग्जाम में भी सितंबर में होगा मैम। तो मुझे ओके, ग्रामर में मैम परफेक्ट होना ही है मुझे तो, क्योंकि ग्रामर 30 मार्क्स का है और वो मेरे लिए चलिए, बहुत। तो अभी आपको जो हमने एडवर्ब का करवाया, ठीक है, ये आपका बिगनिंग में भी करवाया था, ये वाला भी करवाया, 2 और करवाए, और आई थिंक 2 या 3 रह गए, वो कल हम कवर कर लेंगे। आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है? ओके। और समझ बाकी आया? स्पोकन तो मुझे करना ही है मैम, बिकॉज आई एम आल्सो इंटरेस्टेड इन स्पोकन मैम, दैट्स व्हाई वो मैंने भी तभी क्लास वो भी ज्वाइन चाहिए ना, क्योंकि हाँ, क्योंकि एटलीस्ट कम से कम 15 से 20 मिनट हम स्पोकन के नहीं लेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, आप नो बोल नो नहीं पाओगे। नो मैम स्पोकन तो सिर्फ ग्रामर काम नहीं करेगा आरती, सिर्फ ग्रामर ग्रामर काम नहीं करेगा, I'm telling you। ही हाँ, चाहिए। एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है वो, 100%। रिटर्न के लिए बहुत जरूरी है, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग एंड ऑल, सो उसमें ग्रामर, बिकॉज यू नो आवर थॉट प्रोसेस, जब बोलते हैं ना, तो हमारा यस ब्रेन एक ही ट्रैक में होता है, उस टाइम ट्रैकिंग में हम उसके बोलेंगे, ऑफ इज इट कोर्स। पॉसिबल? नो ना, नहीं सोचेंगे हम। अगर हमारा ध्यान ग्रामर में लगा रहा तो फिर बोलेंगे कब? नहीं हो सकता वो। हाँ, आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है, सो इट इज ओके, बट स्पीकिंग के लिए आप ग्रामर में ज्यादा फोकस, मतलब वो ऐसा होता है कि स्लिप ऑफ टंग, हम कुछ बोल गए तो हम क्विकली अपने आप को करेक्ट कर लेते हैं, बिकॉज वी आर अवेयर ऑफ दैट थिंग दैट वी हैव मेड अ मिस्टेक। Nobody is going to judge us, okay? But at the same time, if like you are appearing for exam, so 100% grammar matters a lot, 100%. Okay? यस So by tomorrow, I will try to just complete your adverb and all. Okay? It will be finished. Right? ओके ओके फाइन मैम। But at the end of the day, your hard work will be यस just paid off. यस Right? मैम So एग्जैक्टली। yeah. तो इसके लिए जो भी आपको सिखाया जा रहा है, मैं वर्कशीट दे रही हूँ। अब आपका क्या काम है, आपको ये वर्ड्स याद होगा तो आपको और भी बहुत सारे दे सकते हो, बट ऑफ स्लोली कोर्स। ग्रेजुअली विल प्रोग्रेस, स्लोली ग्रेजुअली। अगर एक साथ ईट करने जाओगे ना, तो नो जैसे नो कहते हैं ना, इंडाइजेशन हो जाएगा, नो इंडाइजेशन हो जाएगा, कुछ नहीं ग्रेस कर पाओगे। और मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ स्लो एंड ट्यूशन, स्लो एंड एक स्टडी होता है विद। ना कि हाँ, लर्निंग विद प्लेफुल मैनर, ये बहुत जरूरी है, ठीक है? आप इसको ज्यादा उसमें लोगे कि एक टेंशन के साथ लोगे तो फिर अपना माइंड ब्लॉक हो जाएगा। नहीं, थोड़ी देर बाद आप खुद ही उठ के चले जाओगे पढ़ते पढ़ते, तो थोड़ा एंजॉयमेंट चाहिए, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड, ओके, जिससे कि आप इजीली चीजों को ग्रेस कर पाओ। गॉट इट? यस मैम। समझ? या ओके, प्रतिभा, नाउ योर टर्न। Yes, ma'am, today's session was good for me because it was my first class and I am little bit nervous about that. But now I'm happy. I learn many things like adverbs and I communicate in English. So it was good. Okay, so now what you have to do, you know, Pratibha, what I feel, just start reading books, okay? Oh, okay. Loud reading, loud reading, Okay, okay? ma'am. And Yes, whenever you read book, na, here, Aarti, also listen to me very carefully as you are going to appear for exam. Just whenever you are reading now, just focus on these terms like preposition, adverb, adjective, their places, everything like in a sentence, how they are using, in which sentence, which preposition is fixed over there. Okay, you have to focus on it Yes, ma'am. while you are reading. Got it? Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. पढ़ते पढ़ते ही आपको फोकस, आपको पूरा वहां पे रखना है कि इन क्यों आया, ऑन क्यों आया, इसके साथ ये होता है, कुछ फिक्स प्रोपोजिशन भी होते हैं, क्योंकि ग्रामर जो है, दिस इज अ वास्ट टॉपिक, ओके, बहुत बड़ा टॉपिक है। सो फॉर दैट आपको थोड़ा वहां पर भी वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है? ओके या Yes, ma'am. बहुत बहुत ज्यादा, मतलब आपको अपने, मतलब अलर्ट रहना पड़ेगा, जो भी कुछ आपके सराउंडिंग से आपको मिले,
उसमें थोड़ा सा आपको जो है ना मेटिकुलसली आपको फोकस करना पड़ेगा कि हाँ छोटी छोटी चीजों में, क्योंकि बिकॉज यू आर गोइंग टू अपियर फॉर एग्जाम, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। आपको एकदम अलर्ट रहना पड़ेगा एवरी टाइम, कोई भी कुछ बोलता है या लिखता है। और मैं तो आपको ये बोलूंगी कि बुक्स की रीडिंग स्टार्ट करो, बहुत हेल्प मिलेगी। Yes, ma'am. ठीक है, ओके, फाइन। So tomorrow your adverb I will try to finish that chapter. Okay, don't worry. Okay, okay.